ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी के अंदर ये क्या पूछ रहे हैं ये देखते हैं। पार्ट नंबर डी के अंदर ये पूछ रहे हैं explain subjectively and quantitatively what happens if a tiny wire is moved upwards at 5 millimeters per second। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट नेट डायरेक्शन और मैग्नेटोमोटिव फोर्स पता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि वायर वाले हिस्से में जो एयर गैप में प्लेस किया गया है विल बी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट टू राइट है इधर, ठीक है, लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और वायर जो है वो इसके अंदर ऐसे प्लेस किया गया और वायर को ऊपर की जानिब मूव किया गया, यानी कि ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो we can use the Fleming's right hand rule which is the generator rule। लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर रूल होता है। तो इसमें अगर आप फर्स्ट फिंगर फील्ड की जानिब करें और थंब को आप ऊपर की जानिब करें फॉर द मोशन, तो आपके सेकंड फिंगर जो करंट है इट शोज दैट द करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेज। ठीक है, यानी इसके अंदर जो करंट है इट विल बी गोइंग इनटू द पेज। ठीक है, तो ये चीज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आ गई आपके पास। अब वो कह रहा है कि क्वांटिटेटिवली भी बता दें, तो क्वांटिटेटिवली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है V क्रॉस बी डॉट एल। V cross B dot L where L is taken as a vector in the direction of the current। ठीक है, तो करंट आपको पता है it is going into the page। V cross B का डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, it is the क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब भी वेक्टर होता है और डॉट प्रोडक्ट का जवाब स्केलर होता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ V which is 5 millimeter per second multiplied by the B field which is found in the last part। ठीक है, तो आई थिंक दैट वाज 0.8 टेस्ला। और sine of the angle between the two, sine of the angle between the two is 90 degree, they are mutually perpendicular। V cross B का डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, taking first finger in the direction of V which is upwards, taking second direction into the direction of B field, तो thumb is going into the page। ठीक है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है इस वेक्टर का जो रिजल्टिंग है इट इज आल्सो गोइंग इनटू द पेज। और L का जो डायरेक्शन है इट इज टेकन एज अ डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हिच इज आल्सो गोइंग इनटू द पेज। तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ द वायर व्हिच इज 5 सेंटीमीटर इनटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में एंगल जीरो है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से व्हेन वी गो टू पार्ट नंबर ई, ठीक है, बस ये इसका जवाब है V क्रॉस B डॉट एल। जब आप इवेल्युएट करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर ई में वो कह रहा है कि भाई अब एक वायर है और उसको स्टेशनरी हेल्ड किया गया है और it is supplied with a current 2 milliampere into the plane of the paper। Then this is the motor rule, you use the Fleming left hand rule। left hand rule में first finger direction of field which will be going towards the right, और second finger is the direction of the current which is going into the page, thumb is going downwards। ठीक है, तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड्स होगी। field is like this, current is going into the plane of the page and you are using the Fleming's left hand rule। first finger field, second finger current, thumb will be pointing downwards, यानी कि इस वायर पे जो फोर्स है थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। और उसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तो आपने सब्जेक्टिवली बता दिया कि इस पर डाउनवर्ड फोर्स होगी। फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, वेयर एल टेकन एज द लेंथ। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स है वो एल क्रॉस बी जो है, लेंथ ऑफ द वायर इज 5 सेंटीमीटर, बी आपने 0.8 निकाला है,
into the sine of the angle between the two. L और P के दरमियान में जो एंगल है वो है 90 डिग्रीज का, और I से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें करंट आपने 2 मिली एम्पियर, ठीक है। और L क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वो अगेन निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट फिंगर फील्ड, करंट का डायरेक्शन जो है वो L का डायरेक्शन आप ले लेते हैं इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, राइट हैंड रूल लगेगा ना, सॉरी इस पे इसका नेट डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल लगेगा। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सेकंड सॉरी फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ L है ना, तो L is inside, first finger will go into the plane of the page, second finger will go in the right direction, then thumb is the net direction, तो इसका net direction भी नीचे की जाने वाला है, ठीक है, जैसा हमने पहले निकाला था, और वही डायरेक्शन इस F का रहेगा। इसकी जो भी वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स नाउ go to the next question, ठीक है। the next question is question number 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास आफ्टर ग्रेजुएटिंग यू आर एम्प्लॉयड एज engineer in a alpha transformers company, you are to conduct the testing of the transformers, find the voltage regulation and efficiency. You have a 15 kVA transformer, 2000 by 200 turns ratio, voltage ratio same as the turns ratio, single phase transformer, ठीक है। और आपने इसकी एक्साइटेशन ब्रांच और सीरीज इम्पीडेंसेस निकालनी है, वोल्टेज रेगुलेशन, और आपको डेटा कुछ दिया हुआ, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये डेटा आप लोगों के पास है, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, ठीक है। सो वी गो टू द व्हाइट बोर्ड, और इसका डेटा प्लग इन करते हैं हम। एक्साइटेशन ब्रांच का जो पैरामीटर है YE, वो आपको पता है एडमिटेंस होता है, तो इट इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ वोल्टेज ओवर करंट, इट इज इक्वल टू करंट ओवर वोल्टेज, तो वो जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो एक्साइटेशन ब्रांच की जो एडमिटेंस है वो आपके पास बराबर आ जाएगी 9.25 इंटू 10⁻3, ठीक हो गया। और थीटा जो है वो उसका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ द पावर फैक्टर, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ द पावर फैक्टर, क्योंकि ये एडमिटेंस है इसलिए माइनस साइन एडिशनल डालना पड़ता है। 58 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1.85, थीटा आपके पास आता है -80.98, ठीक है। यानी इस एडमिटेंस को जब आप कन्वर्ट करते हैं इनटू द रेक्टेंगुलर, तो आपके पास एक्साइटेशन ब्रांच का RC और XM आ जाता है, 9.25 10⁻3 -80.98, दिस इज इक्वल टू, एडमिटेंस है तो 1/RC माइनस J/XM, ठीक है। तो इससे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/RC जो है वो बराबर हो जाता है आपके 1.45 इंटू 10⁻3 के, जिससे आपके पास RC आ जाता है 689.6। इसी तरह से आपके पास जो 1/XM है वो बराबर आ जाता है 9.135 इंटू 10⁻3, XM आपके पास बराबर आ जाता है 109.46। सेट इक्विवेलेंट, इसी तरह से उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाता है वोल्टेज ओवर करंट, तो उसका मैग्नीट्यूड 8.4 है, और जो उसका थीटा इट इज cos इनवर्स ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 42, इसका थीटा आता है 44.4,
Z इक्विवेलेंट जो है 8.4 तो इससे R इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास, इसको रेक्टेंगुलर में आप कन्वर्ट कर लें तो R इक्विवेलेंट जो है वो 6 ओम्स आ जाएगा। X इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा 5.878। ठीक है, तो ये आपके पास पैरामीटर्स आ गए सारे। अब इन्होंने कहा कि इसका प्राइमरी और सेकेंडरी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने। प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसमें आपके पास आपको ये पता है कि आपने हाई साइड पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया होता है और लो वोल्टेज साइड पे ओपन सर्किट टेस्ट किया होता है, और प्राइमरी साइड इज द हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड में आपके पास जो सीरीज इम्पीडेंसेस हैं वो सेम रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइमरी साइड पे ही कैलकुलेट किए गए हैं। दे विल सिंपली स्टे 6 ओम J into 5.878। ठीक है, और जो एक्साइटेशन ब्रांच के पैरामीटर्स हैं उसको आप रिफ्लेक्ट कर लेंगे, तो वो जो आपके पास है वो देंगे ए, इसका जो है वो बनता है, ए जो है वो इसका बनता है टर्न्स रेशियो के बराबर, और टर्न्स रेशियो इसका है 10। ए की वैल्यू है 10, और ये जो है ये बराबर हो जाएगा 68965। ठीक है, 100 से इसको ज़रब दे देंगे। जब आप लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड पे आते हैं तो ए स्क्वायर से ज़रब दे दें, 68965 हो जाएगा, ये 10946 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी साइड है, और जब सेकेंडरी साइड पे आप करेंगे विच इज़ द लो वोल्टेज साइड, एक्साइटेशन ब्रांच के पैरामीटर वैसे ही रहेंगे, और सीरीज साइड वालों को आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो एक्साइटेशन साइड विल बिकम 689.65 109.46, और जो सीरीज वाली इम्पीडेंसेस हैं उसको ए स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 0.06। ठीक है, क्योंकि जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी साइड पे लाते हैं तो ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं 0.058J। okay, so this will be the secondary side, equivalent circuit, and the above one is the primary side equivalent circuit. So this is the solution to part B. Now let's move on to the solution to part C. What does the guy say in part C? The guy says that what is the voltage regulation and the efficiency at full load and 0.8 power factor leading. So let's go and find the efficiency at full load and voltage regulation full load and 0.8 power factor leading. Okay, so let's go. Let's clear the screen. Okay, so we know that the no load voltage is Vp over A from the secondary side equivalent circuit, and this is equal to the full load current. What is the full load current? When we use the transformer at its full rating, which is 15 kVA, and the secondary load is getting 200 volts maximum. Power factor, the question has already mentioned, is cos inverse 0.8, and this is equal to 0.06. We are using the secondary side equivalent circuit for this, again mentioning this. And the load is getting 200 and reference 0 volts. So we get the no load voltage as Vp over A is 201.05 angle 1.77. So the voltage regulation is V no load minus V full load divided by V full load, and we can have it in percentage. So the answer is 0.525%. That will be the voltage regulation. And when we have to calculate the efficiency becomes theta is equal to P out over P out plus losses into 100.
So we know the P out is already 15 kVA into zero point 0.8 power factor. So we substitute that for P out, and we know there are the two losses are excitation branch loss, which is Vp over A square divided by the excitation branch resistance, which is 689.65. Now the series copper loss, this is the excitation branch copper loss, and the series copper loss is maximum current full load is 75 square into 0.06. Again, using the secondary side equivalent circuit, efficiency is something about 97%. Okay, so now let's go to question number 3, which was the last question of the midterm exam. Okay, so in question number 3, what the guy is saying, let's look at the question paper. Question number 3, we have an induction motor. It's 460 volt, 4 pole, 35 horsepower, 50 hertz, Y connected induction motor. It has a slip of 2.5% and it has the following per phase parameters. R1, which is the stator per phase resistance 0.16, R2, which is the rotor resistance 0.15, XM, which is the excitation branch impedance 20J, XM, and X1, which is the stator per phase impedance 0.8J, X2, which is the rotor uh, inductance, it is 1.1J, friction loss is 500, core loss is 400, find the line current, stator power factor, stator copper losses, rotor copper losses, rotor frequency, air gap power and converted power, and efficiency of the motor at these conditions. Okay, so let's go back to the whiteboard. Let's check this out. Okay, so in this question we have to find several things, but first of all we need to make the circuit for question number 3. So the circuit, after we plug in all the things, since the motor is Y connected and the data in the question is line, so we have to convert it into the phase voltage, and we know that in the Y connection the phase voltage is related to line voltage divided by √3, and then we plug in all the parameters. So this is 0.16 is R1, then we have 0.8J is JX1, then we have excitation branch impedance, which is 20J, then we have rotor side R2, which is 0.15, which relates to the rotor copper losses. Rotor side per phase impedance is 1.1J, JX2, and then we have the converted power equivalent resistance, which is R2 1 minus S over S. So we put the value of S is equal to 0.025. So this resistance comes out to be equal to 5.85. Okay, so everything is now depending around this circuit. So first one is how much current the stator is drawing. I1, the line current and phase current are same. This is the per phase equivalent circuit, and in Y we know that phase current and line current are same. I1 will be equal to 460 over under root 3, which is the per phase voltage, divided by 6 plus 1.1J. How this 6 comes? 5.85 plus 0.15 is 6 plus 1.1J. This impedance is in parallel with another impedance of 20J here, and this whole thing is then in series with 0.16 plus 0.8J, which can be seen over here. So when we calculate this, this comes out to be equal to I1, which is same as line current or phase current drawn by the stator. This I1 will be equal to, you plug in all this data, so this will come out to be 460 over under root 3, and this parallel combination is solved as 4.95, 4.987 plus 2.46J plus 0.16 plus 0.8J.
When you solve this, this comes equal to 43.585 minus 32.35. So this is I1, which is the answer to part number A. Okay, so we can, this is the answer to part A, which is the current drawn by the stator. So not rubbing the circuit, we can now rub other parts. Solve for parts B and onwards. Let's rub this. What does the guy say in part B? The part B says the stator power factor. Okay, so we already know the stator current. The stator current was having an angle of minus 32.35. So the power factor is simply cos of 32.35, and this will be a lagging power factor, so it is 0.844 lagging because it was coming with a minus sign. Okay, so even if you use minus or plus the cos, you can calculate because cos is positive in the fourth quadrant. So you can use the angle and then put a lagging to show that this is a lagging power. So this was part B. In part C, it says a stator copper loss. So you know it is 3 times because this is a per phase circuit. It is 3 times I1 square into 0.16. This comes out to be equal to 911 watts. Okay. Then it says rotor copper loss. So for the rotor copper loss, you first need to find I2. So let's get rid of some of this working to make it space. I2 can be easily found by the current divider rule. So I2 will simply be equal to 20J divided by 20J plus 0.6 plus 1.1J into I1 to I1, and this comes out to be equal to 39.7 minus 16.47. Okay, so this will be the value for I2. The rotor copper loss will be 3 times I2 square times 0.15. This comes out to be equal to 710 watts. This was the answer to part number 4. Let's move forward. Let's move forward. Let's come to part number 5, I guess. Yes, rotor frequency. So we know the rotor frequency is equal to S times the stator frequency. Rotor frequency is rotor frequency is 0.025 times the stator frequency. So this is simply equal to 1.25 hertz. In the next part, it says what is the air gap power. Air gap power is equal to input power minus P core minus P stator copper loss. So we already know the Pn is equal to under root 3 times VL times IL cos of minus 32. This is the input power minus the core loss, which is
400 minus the stator copper loss, which is 911. This is 28.024 kilowatt. Okay, and the converted power we know is equal to air gap minus rotor copper loss. So we already know the rotor copper loss, so converted power will be 28.024 minus rotor copper loss was 710 watt, so this will be 0.71 kilowatt. Total answer is 27.3 kilowatt. This is the converted power, and in the last part it is asking you for the efficiency. So let's rub this to make some space. So the efficiency is simply equal to P out. We know P out is equal to P converted minus friction loss. And we already know the friction loss is equal to 500 watts, which is 0.5 kilowatt. So it is P out over P in. P out is this. P in is 29.33. The formula for P in is already, as I told you, is equal to P out over P in. This is simply equal to under root 3 into VL into IL into cos theta, just as I used in the last part. So when we find the efficiency is 91.4%. This brings to the end of the midterm solution. I hope all of you have done well in the midterm. Okay, Allah Hafiz.